Love mixture of cuisines from different Asian countries? City Tarka presents Behind the Table in association with Ghumau, where we get you what it takes to serve you the best. आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज we in the city of bridges, the city of textiles and diamonds and not to forget फूड टू। जी हाँ, हम हैं सूरत में। सूरत की शॉपिंग, सूरत का नाश्ता, गरबा तो है ही, लेकिन इस सिटी में यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर cuisines फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। इसलिए आज का हमारा स्टॉप है द पैन एशियन रेस्टोरेंट विंटेज एशिया इन मैरियट सूरत। एंड लेट मी टेल यू, आज हम सिर्फ फूड ही एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बट वी हैव मेनी सरप्राइजेस planned for you. So let's get rolling. Located on the banks of picturesque Tapi River, Surat Marriott, with its Pan-Asian restaurant Vintage Asia, welcomes us to witness a splendid, one-of-a-kind dining experience, bringing the exquisite flavors of Asia to Surat. Vintage Asia serves Japanese, Thai, Chinese, Malaysian, Indonesian cuisine, and you can choose your favorite dishes through contactless menu. Also, you get to book a private dining area where you can enjoy exclusive meal at this private setup. The ambience here makes you feel just so right for a fine dining experience. You all must be waiting for the surprise, right? So today we will be joined by the very special guest, the chef de cuisine of Vintage Asia, Chef Anno. Welcome sir, and thank you for joining us. So the most important question pehle, what is Vintage Asia and its food about? Vintage Asia Surat Marriott का तीसरा रेस्टोरेंट है, and here we are serving a 5 countries food like Thai, Malaysian, Indonesian, Chinese, Sichuan and Japanese, and live Teppyanki जो सूरत में कहीं नहीं मिलेगा आपको। Oh my God, it's already mouth-watering. So sir, जब आपने menu finalize किया, तब what all things you kept in mind? How was the menu curated? First thing, जब हम कभी मेन्यू बनाते हैं तो we have to think about the सूरत के लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसके अंदर डीपली घुस के जैसे सूरत के लोगों को खाना बहुत पसंद है, right. तो उसी हिसाब से हमने अलग अलग वैरायटीज़ का, अलग अलग क्यूजिन का खाना यहाँ पे डाला है। जैसे आपका सुशी हो गया, जापानीज क्यूजिन को रिलेटेड करता है, एंड थाई फूड है यहाँ पे, मलेशियन है, सिचुआन चाइनीज है, इंडोनेशियन है, जो यहाँ पे मेरे ख्याल से सूरत में बहुत कम रेस्टोरेंट में मिलता होगा। True. So chef, it is said that it is much more difficult in maintaining and being consistent with standards than making standards. तो क्या challenges और pressure आप face करते हो in keeping up with the standard of quality food from kitchen to the table? यहाँ पे जो क्वालिटी हमको चाहिए था वो मिलना पहले बहुत मुश्किल होता था। धीरे धीरे हमने अपने पुराने सोर्सेस को कॉल करके या वो मंगाया है, यहाँ पे अभी जो भी आता है अच्छी क्वालिटी का इंग्रेडिएंट्स मिलता है अभी। राइट, बिकॉज विंटेज एशिया में सर्व होता है cuisines from across the world, तो obviously sir I get your point that ingredients को लाना बहुत ज़्यादा difficult होता होगा। Now let me show you the real experience. Let us all go. Good evening, ma'am. Welcome to Vintage Asia. My name is Salih. Ma'am, do you have any allergy with food? No. No allergy.
So how would you like to have your food? So medium spicy, spicy or not spicy? Medium spicy. Sure. So chef, the spread looks really amazing. तो आप मुझे प्लीज बताइए हम पहले क्या खाने वाले हैं. पहले आप डम्पलिंग से स्टार्ट करो. ओके. इसका नाम है ट्रफल एडामामे डम्पलिंग. सो ये एडामामे जो बीन्स होती है लाइक चाइनीज बीन्स उससे बना हुआ, उसको पेस्ट करके, और इसकी स्किन पोटैटो स्टार्च एंड व्हीट स्टार्च से. और यहाँ पे 3 सॉसेस है लाइक रोस्टेड टमाटो, ग्रीन ऑनियन एंड चिली ऑयल. चिली ऑयल. आपको डिफरेंट सॉस के साथ डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा. Okay, so let's start. Okay. So now that I love spice, I'll go for chili oil. So second thing is kakiyas maki jumbo, English pronunciation crunchy tempura vegetarian roll. So now you should take little wasabi and mix with soya. Okay. This much is enough? Yes. Okay. And slice of ginger को बस sushi के रोल के ऊपर लगा के सोया में Slice of ginger, but the single ginger is not coming up. Okay. This. sushi के ऊपर. And now Dip. dip in the sauce. And now have it. Single bite. So chef, मैंने sushi कभी नहीं खाई थी. It was really tasty and crunchy. So what are we gonna try next? Next आपके लिए हमने jasmine tea भी रखा है यहाँ पे. So Okay. we are serving a jasmine tea as well for the fine dining Okay. restaurant. So should I try? So ये आपको balance करेगा. It is so floral. This is really different, guys. Okay, so now we're done with jasmine tea. What are we gonna have next? Honey chili crispy lotus stem. Lotus stem. Okay. This is slightly sweet, chef. Liked it. And spicy at the end. ये spicy honey chili sauce में टॉस है. Really tasty. If you haven't tried Pan Asian Cuisine yet, you guys surely need to come to Vintage Asia because the food is tasty, hospitality is amazing, and the ambience is just perfect. मैं आपको और बताती, but right now my food is waiting for me. So chef, now we are trying Teppyanki garlic fried rice with teppyanki farms greens with tofu. I believe you have enjoyed the teppyanki hot. Cheers. I loved it. It was superb. The rice is sticky and I'm a real big fan of burnt garlic flavor. So it has a lot of burnt garlic and butter in it. Super tasty. So next, this is tofu. This is really soft. I can just feel melting in my mouth. Really soft and tasty.
It has a very mild flavor actually. It's not very strong on flavors. Lovely. आज तो बहुत मजा आया. It was truly an experience to dine at Vintage Asia. Not only the food, but the entire experience was so wholesome. The ambience, great service, and delectable food. So now, if you want to enjoy Pan Asian cuisine in the city of Surat, you know where to be. Vintage Asia, Marriott, Surat.